प्रॉपर ट्रेनिंग ली थी. आई यूज्ड टू प्ले प्रॉपर क्रिकेट. इट्स बीन वेरी एक्साइटिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. स्पेशली हमारी स्टोरी आई बिलीव बहुत अच्छी है. रिजेक्शंस आर अ पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशन. वो मुझे आई फील आई बीन ट्राइंग टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. एक्टिंग इज नॉट एन इजी जॉब फॉर ऑल द पीपल आउट देयर. और एक्सपेक्टेशंस तो कभी खत्म होती नहीं है लाइफ में. बट आई एम ग्लैड दैट दैट शो हैपेंड एंड पीपल have been very kind. Hello Aakash, welcome to ETimes TV. How are you? I'm very good. Thank you for having me here. Thank you for joining us. And फालतू के प्रोमोस तो बहुत इंटरेस्टिंग नजर आ रहे हैं. जो व्यूवर्स हैं उनकी क्यूरियोसिटी भी बढ़ रही है कि किस तरीके का शो होने वाला है, क्या किस तरीके के ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं. So tell me something about it and about the character. What prompted you to take up the show? All right. So I'll start with the show itself. Show की story फालतू के बारे में है, and it's a very फालतू is a little girl who comes from a regressive background, and she dares to dream and dream big, and she's gifted with a rare talent, and it's a very inspiring story, I feel, and I hope it will inspire a lot of little girls who come from small towns and regressive backgrounds. Yes. And despite of all the difficult circumstances and all the difficulties in their path, they still dare to dream, like how Faltu does. Right. So yeah, and the one thing that attracted me towards the show was obviously I only knew about myself, my character, which is Ayan Mittal. Yeah. And it's a very well written character, and there's a lot of Ayan has a lot of layers to himself. Yes. And it's a very very real, very relatable story that Ayan has. On one hand, Faltu dares to dream, and on the other hand, Ayan is a man who has given up on his dreams because of the circumstances. And I feel that is the story of a lot of people in today's time. And that's how I feel people will relate with it. And I think you're playing a cricketer on the show, if I'm not wrong. Yeah. So क्या बचपन से ही मतलब इंडिया में तो क्रिकेट एंड बॉलीवुड आर लाइक रिलीजन्स, राइट? मतलब बचपन से ही हर सेकंड लड़के से पूछो या लड़की से पूछो या किसी भी इंसान से पूछो, क्रिकेट के लिए उनका एक अंदर से प्यार उमड़ता है. लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो क्रिकेट नहीं देखते या क्रिकेट इतना ज्यादा पसंद नहीं करते. आप कौन से साइड है? मैं वो पहली वाली लिस्ट में आता हूँ जो या तो क्रिकेटर बनना चाहते हैं या एक्टर बनना चाहते हैं. मैं काफी टाइम तक अपनी लाइफ में क्रिकेटर बनना चाहता था, बट देन आई फेल्ट दैट एक्टिंग इज व्हाट आई एम हियर फॉर, एंड आई वेंट फॉर इट. बट हाँ, मेरी ट्रेनिंग शो के लिए मेरी ट्रेनिंग बचपन से चल रही है. I've been playing cricket ever since I could stand up and walk. So मतलब कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं करना पड़ा बिकॉज आप बचपन से क्रिकेट खेल रहे थे तो आपको सारी चीजें पता थी. एंड अगर आपने ट्रेनिंग भी ली थी? ट्रेनिंग वही मैंने कहा आपसे कि प्रॉपर ट्रेनिंग ली थी. आई यूज्ड टू प्ले प्रॉपर क्रिकेट, and I've had the good luck of playing with a lot of good players, and I've seen a lot of good players. Sorry? Like anyone from the cricket team right now? Yes, of course. I've looked at Gautam Gambhir very closely, or Virender Sehwag, Ashish Nehra. Wow. And I think I'm very lucky to have had the chance to watch them play in the nets. And तो मेरी ट्रेनिंग बचपन से ही चल रही है फालतू के लिए. And I'm glad that training is put to use. Yeah. Usually पेरेंट्स जो होते हैं, अगर बच्चे क्रिकेट की तरफ इंक्लाइंड है या स्पोर्ट्स की तरफ, तो वो काफी मोटिवेट भी करते हैं, क्योंकि इंडिया में सबको पता है कि क्रिकेट में जो फ्यूचर है वो काफी ब्राइट है. लेकिन अगर वहीं हम इंडस्ट्री की बात करें, प्रॉपर बॉलीवुड या शोबिज इंडस्ट्री की, यहाँ पे सब कुछ आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है. इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, वहां पर भी करता है, लेकिन यहाँ पे मंथली इनकम नहीं है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल लाइफ है.
कि आपने एक शो कर लिया तो जरूरी नहीं है कि वो शो हिट हो गया तो नेक्स्ट भी आपके जो झोली में आएगा वो उतना ही सक्सेसफुल होगा। तो जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया कि आप क्रिकेट छोड़कर शोबिस की तरफ जाना चाहते हैं, वो कितने सपोर्टिव थे? My parents have always been very supportive, and I'm very grateful for that. और आज भी उनको एक्टिंग से उतना ही प्यार है जितना मुझे है. They try to be as understanding as they can, and they're very cooperative. But मुझे लगता है क्रिकेट एज अ प्रोफेशन एक्टिंग से ज़्यादा डिफिकल्ट है टू गेट एन अपॉर्चुनिटी इन क्रिकेट, क्योंकि सब कुछ होने के बाद प्लेइंग 11 ही होता है. राइट। एक्टिंग में एक शो में 50 एक्टर्स होते हैं जी। 50 कैरेक्टर्स होते हैं, बट वहां पे बहुत कम होते हैं. और एक इंजरी हो गई एंड योर करियर इज डन. सो आई फील एंड एक्टिंग को हमारा देखने का नजरिया आई फील थोड़ा सा गलत है जनरल ऑडियंस का. एक्टिंग हैज नथिंग टू डू विद लक. इट इज एज मच अ प्रोफेशन एज एनी अदर प्रोफेशन. Or you have to give in time, put in effort for the preparation. You have to get the right training. You need to know the technique. और ये किसी भी और प्रोफेशन की तरह है, आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको सीखना पड़ता है. दिस हैज नथिंग टू डू विद लक. दैट्स व्हाट आई फील. लक तो है ही, बट आई फील अगर आप भी काम सीखते हैं तो उसका यूज कहीं ना कहीं तो हो ही जाता है. अब हर कोई शाहरुख खान नहीं बन सकता है, शाहरुख खान एक ही है. तो आप सबकी अपनी जर्नी होती है. यू शुड जस्ट focus on learning every day, and it will pay off. Yeah. That's what I feel. And how has been the experience of working on Faltu? Because it has an ensemble cast और काफी अच्छे एक्टर्स, प्रॉमिसिंग एक्टर्स और पॉपुलर एक्टर्स इस शो का हिस्सा हैं. तो अब तक की जर्नी आपकी कैसी रही है? बहुत अच्छी रही है. हमने बहुत एंजॉय किया है शूटिंग इन सामोद. हमारा आउटडोर्स अभी तक खत्म नहीं हुआ है. अभी भी वी आर जस्ट शफलिंग एवरी डे, शूटिंग इन डिफरेंट लोकेशंस, व्हिच इज फन. अ लिटिल हेक्टिक बट फन, यस. सो यू गेट टू बी इन फ्रेश एयर. बाहर खुले में शूट होता है, यू शूटिंग ऑन द ग्राउंड और सम अदर लोकेशन. इट्स अ लॉट ऑफ फन. अनलाइक जो यूजुअल डेली सोप्स होते हैं, यू आर ऑलवेज वो उसी चार दीवारी में आप एक सेट पे रोज शूट कर रहे होते हैं. It becomes a little monotonous after a while, but till now, Faltu has been a lot of fun. Or it's been very exciting, very interesting. Especially हमारी story, I believe बहुत अच्छी है, बहुत interesting है. But who am I to judge? Right. बताइए. एंड टेल मी कि आपने खुद पर्सनली जैसे आपने कहा कि एक पॉइंट आया वेयर आई फेल्ट दैट आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स एक्टिंग. वो क्या वजह थी जब आपको लगा कि यू विल गिव अप ऑन क्रिकेट एंड यू आर गोइंग टू टेक अप एक्टिंग एज अ प्रोफेशन अहेड? And how difficult was that choice? So I've been trained in martial arts. मैं शोतोकान में black belt हूँ, which is a form of karate. And my dad has a school in Delhi, which has been running for 30 years now. So I've been a coach over there, like how my character is a coach, Ayan, in the show Faltu. And तो वो transition उतना difficult नहीं था. I think I fell in love with acting ऑन द फर्स्ट डे. मतलब जब मैं पहली बार मैं एक्सपोज हुआ उस दुनिया में, तो मैं सो माय द वे आई गॉट इनटू एक्टिंग वाज आई वांटेड टू बंक क्लासेस. आई डिडंट लाइक सिटिंग इन द क्लासरूम. कोई बहाना ढूंढते थे हम लोग. आई यूज्ड टू प्ले हॉकी एज वेल, क्रिकेट या व्हाटएवर रीजन आई यूज्ड टू गेट क्लास से निकलने का. तो वो हमेशा वही रहता था दिमाग में कि किसी तरह आई नीड टू गेट आउट. So one day I met with these people who were doing a play in our school, and then I got to know कि play करेंगे तो 4 महीने क्लास से छुट्टी मिलेगी with attendance. Okay. So that's how I got into acting, and once I went on stage, the first time perform किया, तो I felt कि this is something that I really love.
Hmm. And till today, I feel very grateful that I get to do what I love, Hmm. So, and I'm getting paid for it. या बट जैसे मैंने पूछा कि क्या डिफिकल्ट चॉइस था वो, क्योंकि क्रिकेट भी आप एंजॉय कर रहे थे. मैं क्रिकेट अभी भी इंजॉय कर लेता हूँ, तो हम्म. डिफिकल्ट चॉइस नहीं था. एज आई सेड, आई फील आई एम वेरी लकी दैट वे. मैं आज भी सेट पे भी जहाँ मौका मिलता है क्रिकेट खेल लेता हूँ. हम्म. और क्रिकेट तो जिंदगी भर साथ रहेगा. हम्म. दैट इज नॉट गोइंग एनीवेयर. Even today when I go back home to Delhi, me and my brother, we play every day, या. just like we used to 20 years ago. So nothing has changed. The love for cricket will never go away. एंड हु इज योर फेवरेट प्लेयर? Right now, या. Rohit Sharma. रोहित शर्मा. ओके. आई थॉट विराट कोहली हर किसी का फेवरेट होता है, वही नाम नहीं लेके. नहीं, विराट कोहली तो है ही फेवरेट, बट हाँ. लाइक मुझे लगता है आप, हाँ नहीं, बट जस्ट रोहित शर्मा. आई वुड नॉट लाइक टू कंपैरिजंस नहीं कर elaborate on सकते, that. सब सब Yeah, सब अच्छे हैं. एंड इनिशियली Virat while Kohli, Virat Kohli is a living legend. There's no doubt about it. and while growing up. While growing up, I was very fond of Gautam Gambhir, and then I was very fond of Yuvraj Singh and Dhoni, and there have been a lot of great players Yeah. that have played for our country. Yes. So I Yes. think you can't take away anything from any of them. You come from Delhi, as you said. तो मुंबई में सबको पता है कि शहर बहुत महंगा है, यहाँ पे सरवाइव करना बहुत इजी नहीं है. हर चीज का बहुत ज्यादा खर्चा है यहाँ पर, रहने से लेके अपने आप को मेंटेन करने से लेकर सब कुछ. और वैसे में स्ट्रगल करना रोल्स के लिए, ऑडिशंस देना. कैसी रही है आपकी जर्नी? कितने रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा है टू बैक दैट योर फर्स्ट रोल, द फर्स्ट प्रोजेक्ट? फर्स्ट प्रोजेक्ट तो इजीली मिल गया था, बट the things that you learn with time are the judgments that people pass on you. When you becoming an actor, when you are auditioning for a part, Yeah. कोई भी आके आपको कर जाता है. Any Tom, Dick and Harry will come and tell you that you look like this, you should do this way. और उनका दूर दूर तक कुछ एक्टिंग से लेना देना नहीं है तब भी. तो वो जजमेंट्स आर द थिंग्स दैट बॉदर यू. रिजेक्शंस आर अ पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशन. वो मुझे आई फील आई बीन ट्राइंग टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. Yeah. But rejections are not easy on anybody, no matter how strong or prepared you are. But you have to live with it. It is a part of our profession. Usually आप किसी और प्रोफेशन में होते हो तो आप एक जॉब ज्वाइन करते हो, and after 6 months, after a year, you change and you Yeah. interview for a different part, different job. True. यहाँ पे we are interviewing every day, and sometimes we are interviewing three, 4 times a day. So every audition is a different ball game, is a different challenge. Yes. And I believe कि I should know where I stand. I should keep working on my craft and not get affected by people passing judgments. But at the same time, I don't ignore all of them. There are some people, I've been lucky. I'm grateful that there are some good people in my life who have guided me in the right direction. And I've got to learn from some really good people. People like Neeraj Kabi sir. And I feel आपको लाइफ में एक सही गुरु की बहुत जरूरत होती है. जी. एंड द सेम गोज विद आवर शो. फालतू को एक गुरु की जरूरत है, सही गाइडेंस की जरूरत है. और वहां पे एक लड़का आता है, अयान मित्तल, who helps her out. अब वो कैसे होता है वो, for that people will have to watch the show. As you said कि जजमेंट्स बहुत इजीली लोग पास कर देते हैं. सबसे हार्श कोई जजमेंट जो आपने फेस किया, जो आपको उस टाइम के लिए आपके लिए हार्ट ब्रेकिंग था? मैं ऐसे हार्ट ब्रेक करने नहीं देता हूँ जजमेंट्स को. हाँ, बट अफेक्ट किया हो थोड़े लेवल तक? I don't know. I would not like to recall all that, but
ठीक है, वो सबकी अपनी चॉइस होती है, एंड वो सिर्फ एक्टर्स के लिए नहीं, आई फील लोग वैसे भी कुछ लोग होते हैं, दे दे जज यू एंड या दैट्स नॉट राइट. या इंडिया में तो बहुत आई ही फील ये acting is not an easy job for all the people out there. You expose yourself. It's a very private, very personal thing. 200 लोग आपको देख रहे होते हैं, and you put yourself out there वहाँ पे. 200 लोग तो लाइव देख रहे होते हैं, but otherwise when the thing gets telecast, तो वहाँ पे तो पूरी दुनिया देख रही होती है. जी So you have to get rid of all those insecurities and need to know the craft. You need to be confident. या No matter what is going on in your life or your head, you या have to be your 100%. You have to be present. So it's a या very spiritual thing as well, I think. या एंड व्हाट अबाउट रिजेक्शंस? कोई एक रिजेक्शंस जिसने आपको अफेक्ट किया हो पर्सनली? So I signed a film, and this was back in the day, a couple of years ago, and a lot of auditioning was done, a lot of testing was done, and we went on the set, and it was an international film, and the director felt that I was too good looking for the part. Oh. And so that happened. I did get upset, but after a while, with time, you grow and you learn. And I realized that everything happens for a reason. And today, I'm glad that it happened. Like it had to happen, so it happened. Your last show was उसका सीक्वल था, लेकिन लोगों ने आपको बहुत पसंद किया और लोगों ने काफी अप्रिशिएट भी किया वो शो को. शो थोड़ा थोड़ा पिकअप करने लगा था, बट देन देयर वाज अ कॉल टेकन टू टेक इट ऑफ एयर. लेकिन लोग बहुत पसंद कर रहे थे आपका वो शो. ऑनलाइन भी काफी सारे पॉजिटिव फीडबैक्स मिल रहे थे. ऐसे में जब आप इतनी एनर्जी किसी शो में इन्वेस्ट करते हैं, फिर लेकिन उसका रिजल्ट ऐसा हो, क्या वो सेटबैक की तरह होता है और यू टेक इट एज अ लर्निंग? सेटबैक तो नहीं. इट्स ऑलवेज सैड. आप इतने सारे लोगों से रोज मिलते हो, यू बिकम यू डेवलप अ बॉन्ड, यू बिकम लाइक अ फैमिली. उनसे जब अलग होते हो, तो वो मोमेंट थोड़ा इमोशनल हो जाता है. बट अदरवाइज आई फील एवरी स्टोरी, एवरी फेट, एवरी स्टोरी, एवरी शो हैज इट्स ओन फेट. It was we were supposed to get done with the story. We concluded it well. और expectations तो कभी खत्म होती नहीं है लाइफ में. But I am glad that that show happened and people have been very kind towards me. Right. Before wrapping up, आकाश, जैसे मैंने पहले पूछा कि मुंबई जैसा शहर, यहाँ पर रहना, अपने आप को बिना, जब तक आपको काम नहीं मिलता, सरवाइव करना, वो दौर कितना मुश्किल रहा आपका, और वहां पे फैमिली कितनी सपोर्टिव रही? My family has been very supportive, but even otherwise, I live a very simple life. I have a very basic, simple lifestyle. और so I hope कि अभी जहाँ सारा एफर्ट जा रहा है, सारी एनर्जी जा रही है in Faltu, people like it. Yeah. Because we put our blood, sweat and tears, literally blood, sweat and tears in this show. Yes. और I hope लोगों को पसंद आए. कुछ कहना चाहेंगे फैंस को, जो लोग प्रोमोस देख रहे हैं और शो के लिए इंतजार कर रहे हैं? सबसे पहले तो जो लोग प्रोमोस देख रहे हैं उनको कहना चाहूंगा, प्लीज डोंट प्रिज्यूम एनीथिंग अबाउट द शो. वी आर नॉट इन एनी वे, any possible way glorifying extramarital affair. There's a lot more to the story, and आप प्लीज देखिए. बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग. बहुत सुंदर कहानी लिखी है, और बस नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू डिसाइड कि हमने कैसा काम किया है, and I hope you guys like it. Thank you so much, Aakash. It was lovely talking to you, and all the best for the show. Thank you so much. Thank you. Take care. Bye. Bye-bye.